Namaskar everyone, and thank you for accepting our inviting and joining this event. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं जस्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्यू ग्राउंड रूल्स सेट करना चाहूँगा एंड फ्लो उनको बताना चाहूँगा। आज हमारे साथ मिस्टर निताई मेहता जी हैं, जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी एंड फाउंडर हैं प्रजा फाउंडेशन के। वो अपना ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, वेलकम स्पीच देंगे सबको। उसके बाद नुपुर हसीजा जी जो ओपनिंग रिमार्क्स देंगी, एंड देन आई विल गो अहेड एंड present the findings of our paper of our report on women elected representatives in city governments, and then we will have a panel discussion which will be moderated by Ms. Meghna Malhotra. पैनल डिस्कशन खत्म होने के बाद में हम आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी है वो लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, एंड माय टीम विल अलाउ यू टू स्पीक एंड आस्क योर क्वेश्चन। साथ ही साथ आप आपके जो भी प्रश्न होंगे वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड आपके प्रश्नों को हम रेलेवेंट स्पीकर्स तक पहुंचाएंगे ताकि वो आंसर कर सकें। So with this, we are starting with the event now. So I would request Mr. Nitai Mehta to come and welcome the audience. Thank you, Yogesh. Welcome everybody, friends, ladies and gentlemen, to the launch of Praja's report on empowerment of women elected representatives in city governments. I'd like to sort of thank our supporters, the Friedrich Naumann Foundation, the A.T. Chandra Foundation, and others who have supported Praja in helping us come out with this report. Which is a very critical report. As you know, it is very not only critical, but it's also very topical, considering that the government of India has now passed the Act for Women's Reservation in Lok Sabha and the state legislatures also. Having said that, the women's reservation in our cities came about many years ago in 1992 through the 74th Constitutional Amendment. And many state legislatures have already passed the act reserving between 33% to 50% of reservations for women in municipal councils across the country. This particular report actually looks at the impact that this reservation has had over the years for women elected representatives. It is looking and studying the different acts and the impact that has happened in different cities. It has looked at the rules and regulations, the participation of the women elected representatives, the questions asked, and other such interesting data. It's a very rich report. Of course, Yogesh will be presenting the data and information to you. Also, it is also looking at suggesting some sort of improvements and some sort of more sort of direction of empowering our women elected representatives, looking at training programs and other such things which can help and enable and empower the women elected representatives actually participate more effectively for the betterment and governance of the city. We have a very distinguished panel today who's going to discuss this report and also give us food for thought for ideas of what can be done to increase the participation and empowerment of women elected representatives. This is a report that can also reflect on what should we expect that may happen once the new act that has been passed by the parliament comes into play, and how we can really make this act and reservation for women and involvement of women in our public life and as important a part of our society to participate and in the growth of the country and governance of the country. I'm quite looking forward to this discussion that we're going to have with this distinguished panel. I would like to now invite Ms. Nupur Hasija from the Friedrich Naumann Foundation to deliver our opening remarks. But before she does that, I'd like to say that how the Friedrich Naumann Foundation has actually supported Praja over the years, I would say right from the beginning. And we thank the Friedrich Naumann Foundation for this support and continued support that they've given us. Thank you. I hand it over now to Nupur Hasija. Thank you so much, Nitai. Thanks. Hello, everyone. Good evening. Respected panelists and audience here.
I'm truly honored to be here today addressing the important panel discussion that delves into the important role women play in politics and local governance. It is a subject close to my heart, and I believe it's imperative that we recognize the significance of women's participation in these realms. Women in politics and local governance are not just stakeholders, they are catalysts of change, and their engagement is essential for creating balanced, equitable, and inclusive societies. In this context, I appreciate the role of Praja in advancing this important issue of participatory governance and the performance of elected women representatives in advancing this cause. FNF is proud to have Praja as an important partner since 2004, which is committed to promoting accountable, inclusive, sustainable, and participative governance. I also appreciate Praja for conducting the second edition of the Urban Governance Index in 2023, mapping the status of reforms in 32 cities across 28 states and 4 union territories. This study examines the implications of the 74th Constitution Amendment Act 1992, which mandated the reservation of at least 1/3 of the total seats in every municipalities for women representatives. The 74th Amendment Act was designed to redress historical gender imbalances and create a platform for women to play an active role in urban governance. However, as many of us believe, mere reservation is insufficient to ensure the effective representation of half of our city's population. Genuine empowerment necessitates a comprehensive approach that transcends quotas and includes building the capacities and encouraging the active engagement of women in our democratic processes. I commend Praja for taking up this crucial topic. We're delighted to join hands in supporting this initiative. Our responsibility is to realize the vision of our Constitution framers by equipping women elected representatives with necessary skills, making them accountable and nurturing their abilities to participate effectively. This is not just about gender equality. It's about strengthening the very foundation of our democratic systems. Recently, Government of India has proposed Women Reservation 2023 bill for 15 years, which is very encouraging and thoughtful in strengthening the foundation of women empowerment. Legal representation and quotas for women are essential, but they are not enough. True empowerment goes beyond numbers. It requires social reforms and full support of families and society. To ensure that women in politics and local governance are effective leaders, we must change societal norms and provide them with necessary backing and encouragement from their communities. It's not just about representation, it's about empowering women to lead and shape both politics and society. As we all know, empowering women is not an isolated issue. It is intrinsically linked to broader social, economic, and political development. Empowered women are agents of positive change. Our focus should go beyond politics and encompass all areas of life. While we discuss women's empowerment and political representation, it's important to acknowledge the broader context. We must remember that empowerment is not about reservations based on gender, but rather creating an environment of unbiased opportunities. Merit should be our guiding principle, ensuring that all individuals, irrespective of their gender, have equal access to opportunities. However, it should be acknowledged that when it comes to nurturing women's leadership, simply relying on merit is not sufficient. Achieving gender equality in women's leadership often requires targeted efforts and support of overcome systemic biases and promote diversity. Today's event, organized by Praja, marks a significant stride towards realizing the empowerment of women in elected positions within our cities. We should remember that women's empowerment is not a matter of empty words. It's a commitment to crafting a more inclusive, fair, and representative democracy. On behalf of FNF, we assure to support in whatever way we can in this endeavor. Finally, I encourage all of you to actively participate in these discussions and contribute to the vision of a future where women are genuinely empowered and fully equipped to contribute to the betterment of our society. Together, we can construct a brighter and more equitable future for all, founded on merit and targeted
support to women's leadership. Thank you for your attention, and I extend my best wishes for fruitful and meaningful deliberations during this consultation panel discussion. Thank you so much. Thank you very much, Nupur, for such a wonderful opening remarks, and I'm sure it will lead to a wonderful panel discussion as well. Now, with this, I would request my team to put the link of our report so that we can virtually launch this product, the report on empowerment of elected women representatives in local governments. The link has been put on with the key highlights. And I will start with sharing some of the key highlights of the report that we have come up with during the analysis of the data that we have been able to gather. First of all, I would just like to inform that पहले जो हमने study किया, ये study सबसे पहले कि 37 cities across 28 states and 3 union territories में हमने किया है, जिसमें से टोटल हमने 800 इंटरव्यू स्टेक होल्डर्स, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सीएसओ, ये सारे इन्वॉल्व थे। और उसके पहले हमने जो सेकेंडरी रिसर्च किया था, जिसमें हमने एक्ट रेस्पेक्टिव म्युनिसिपल स्टेट के म्युनिसिपैलिटी एक्ट्स पढ़े, वो एक्ट्स में कितना रिजर्वेशन दिया गया है उसको हमने समझने की कोशिश की, एंड देन उस पर ग्राउंड में एक्चुअली किस तरीके का रिजर्वेशन है, कमिटीज में कितने रिजर्वेशन है और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कितना है विमेन का, उसको हमने ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर करने की कोशिश की। एंड देन उसके आगे बढ़कर कि एक्चुअल पार्टिसिपेशन कितना है विमेन का इन टर्म्स ऑफ देयर अटेंडेंस, एंड वो कितने प्रश्न उठा रहे हैं जनरल बॉडी मीटिंग में, हाउस में, और किस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर हमने ये फाइंडिंग्स लाने की कोशिश की है। तो ना कि रिजर्वेशन बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, एट द सेम टाइम उनका पार्टिसिपेशन कितना है, वो हम इस रिपोर्ट द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि रिपोर्ट में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं कि कितने सिटीज हमने स्टडी किए, कितने सिटीज का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कितने सिटीज में एक्चुअल विमेन रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी किया है, और कितने सिटीज का हमने डेलिब्रेटिव डेटा स्टडी किया है। कुछ, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ सिटीज में अभी भी इलेक्टेड बॉडी नहीं है, तो उसको भी हमने उसका एक्चुअली लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, बट एक इलेक्टेड बॉडी ना होने के कारण वहां पर करंट रिप्रेजेंटेशन जाना मुश्किल था, तो उसको भी हमने जो हमारा मेथोडोलॉजी सेक्शन है उसमें क्लियरली डिफाइन किया है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है। तो जैसे हमने जब पहले देखा तो 15 स्टेट्स, 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज हमने जितने भी स्टडी किए, उसमें से 15 राज्य ऐसे हैं जिसमें विमेन के लिए अर्बन लोकल बॉडी में या सिटी गवर्नमेंट में अगर मैं कहूँ तो 50% रिजर्वेशन रखा गया है, और 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें केवल अभी भी 33% रिजर्वेशन ही रखा गया है। वहीं आगे चलकर जब हमने एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखने की बात की तो सिटी गवर्नमेंट्स लाइक विजयवाड़ा, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर एंड अगरतला में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन विमेन का अगर हम देखें तो वो 55% से भी ज्यादा था, जो कि मिनिमम रिजर्वेशन से भी एक्चुअल पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा था। इनफैक्ट अगरतला में अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो केवल 33% रिजर्वेशन था, जबकि वहां पर अगर हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वहां पर 57% रिप्रेजेंटेशन दिखने में आया है विमेन का। आगे जो 5 सिटीज हमने इस दौरान स्टडी की, जहां श्रीनगर, शिलोंग, पणजी, हैदराबाद एंड वारंगल, वहां पर हमें पता चला कि दे डू नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर एंड डेप्यूटी मेयर, एंड ओनली 2 सिटीज जैसे जो कि तिरुवनंतपुरम एंड बेंगलुरु हैव द प्रोविजन फॉर वुमेन रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मेयर। छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी मेयर के प्रोविजन का कोई प्रावधान नहीं है, और यूपी और उत्तराखंड में डेप्यूटी मेयर को ओमिट किया गया 2007 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में से। तो इस तरीके से ये दिक्कत कर आ रहा है। और कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इसमें वेमेन का रिजर्वेशन दिया गया है, बट ओनली फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरीज। सो ओपनली अगर हम एक जेंडर एज अ विमेन की बात करें तो वहां पर सिर्फ इन कैटेगरीज को लेकर के ही विमेन का रिजर्वेशन दिया गया है। और एक चौंकाने वाली बात ये निकली कि कोलकाता का जब हमने एक्ट पढ़ा तो उसमें ये निकल के आया कि जो पोस्ट ऑफ मेयर का जो पोस्ट है वो फर्स्ट टर्म के लिए ही विमेन के लिए रिजर्वेशन है, बट उसमें कंडीशन ये दिया गया है कि ओनली इफ एटलीस्ट
50% विमेन टोटल इलेक्टेड मेंबर्स में, अगर 50% विमेन है तभी ये विमेन रिजर्वेशन मेयर पोस्ट के लिए फर्स्ट टर्म के लिए लागू होगा। तो ये कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पर मेयर पोस्ट के लिए और डेप्यूटी मेयर पोस्ट के लिए रिजर्वेशन के लिए हम निकली। आगे चल के देखते हैं कि जो डेलिब्रेटिव बॉडीज, जो कमिटी समितियां होती है, उसमें रिजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कितना दिखाई दे रहा है। तो वही अगर हम बात करें तो केवल 4 राज्य और 7 सिटीज जो यहाँ पर हाईलाइट है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं में जो स्टैंडिंग या एपेक्स कमिटी होती है उनके विमेन के लिए रिजर्वेशन है। और देर इज नो रिजर्वेशन फॉर स्टैंडिंग और एपेक्स कमिटी इन द म्युनिसिपल एक्ट्स। मतलब स्टैंडिंग और एपेक्स कमिटी का ही प्रावधान नहीं है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, चंडीगढ़ और वारंगल में। और टोटल अगर हम देखें, जो हमने 22 राज्य जो इसके लिए हमने स्टडी किए हैं, अगर हमने उसमें 22 सिटीज, सॉरी राज्य नहीं, 22 सिटीज जो हमने स्टडी किए, उसमें से केवल टोटल अगर हम देखें तो केवल 7 सीट ही विमेन के लिए रिजर्व थी एपेक्स बॉडी में। हवेवर टोटल 86 विमेन रिप्रेजेंटेशन, 86 विमेन का हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर हम इस टेबल में देखें तो। साथ ही साथ जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, जो 7 सिटीज हमने वहां पर मार्क किए हुए हैं, उसमें जो 40% एंड मोर रिप्रेजेंटेशन देखा गया है विमेन का इन एपेक्स कमिटीज। वहीं अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट कमिटीज में, तो जो खाली केवल 4 राज्य आउट ऑफ 28 स्टेट्स, उन्हीं में एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला करके केवल 4 राज्यों में ही प्रावधान है कि विमेन को सब्जेक्ट कमिटी का चेयरपर्सन बनाया जाए। उसमें से भी 4 राज्यों में अगर मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये इसलिए लागू होता है क्योंकि वहां पर मेयर इन काउंसिल सिस्टम है, सो बाय डिफॉल्ट एक विमेन कोई भी सब्जेक्ट कमिटी की चेयरपर्सन रहती है। और महाराष्ट्र और ओडिशा में अगर हम देखें तो जो एक कमिटी, केवल एक कमिटी में उनको चेयरपर्सन का प्रावधान दिया गया है, वो भी केवल विमेन एंड चाइल्ड फेयर कमिटी या फिर सोशल जस्टिस कमिटी का। वहीं अगर हम बात करें जो सिटीज जैसे विजयवाड़ा, कोयम्बतूर एंड तिरुवनंतपुरम, वहां पे 50% से ज्यादा या 55% से ज्यादा सब्जेक्ट कमिटियों में विमेन एज अ चेयरपर्सन के नियुक्ति पर वहां पर अभी काम कर रही हैं। तो ये रहा हमें दिखाई देता है कमिटी चेयरपर्सन्स का। वहीं जब हमने आगे चल के स्टडी किया तो हमें डीप डाइव करके पता चला कि 31 सिटीज आउट ऑफ जो हमने 37 सिटीज स्टडी किया है अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 3 यूटीज do not have provision for reservation of women as a member of subject committee। इतने मेंबर सब्जेक्ट कमिटीज में होने चाहिए, उनका कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है। और जैसे कि हमने 7 सिटीज जो हमने देखे, जिसमें महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गोवा, और जो हमने डीप डाइव करके स्टडी किया, उसमें केवल जो मेंबरशिप का, इसमें मैं चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें महिलाएं कमिटी की मेंबर होनी चाहिए, केवल इन्हीं राज्यों में वो भी आगे चलकर केवल एक ही कमिटी जो कि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जस्टिस कमिटी की ही वो मेंबर रह सकती है, इस तरीके का प्रावधान है। तो ये भी हमें दिखने में आया है, जो कि एक्चुअल पार्टिसिपेशन कमिटीज में किस तरीके के पार्टिसिपेशन दिखता है, उसमें से भी एक झलक हमें दिखाई देता है कि किस लेवल का पार्टिसिपेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम डिसीजन मेकिंग कमिटीज की बात करें तो केवल ईटानगर, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, इंदौर और तिरुवनंतपुरम जैसे ही राज्य सिटीज में ही प्रावधान है कि विमेन वहां पर कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तिरुवनंतपुरम का अभी फिलहाल हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं दिखा पा रहे। बाकी आप इसमें देख सकते हैं इस टेबल में कि कितनी विमेन किस जो डिसीजन मेकिंग कमिटी होती है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क्स को फाइनल करना, अप्रूवल देना, उस तरीके की जो कमिटी होती है उसमें कितने विमेन मेंबर, टोटल कमिटी मेंबर्स कितने हैं और विमेन एक्चुअल विमेन काउंसिलर्स कितने उस कमिटी में मेंबर है, वो इस टेबल में आपको दिखाई देगा, और जो कि हमारे रिपोर्ट में काफी डिटेल तरीके से भी दर्शाया गया है। वहीं अगर हम ये अभी तक हमने बात की कि इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, पर आगे चल के हमें ये भी देखना होगा कि इनका एक्चुअल पार्टिसिपेशन किस लेवल पर आ रहा है। तो वो भी हमने जो 14 राज्यों का एक सैंपल स्टडी किया, जिसमें से हमने उनके जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग और हाउस में महिलाओं के और टोटल काउंसिलर्स, जितने भी काउंसिलर्स हैं, उनके अटेंडेंस क्या है, वे कितने सवाल पूछ रहे हैं और किन किन इश्यूज पर सवाल पूछ रहे हैं, उस पर भी हमने एक
एनालिसिस किया, और उसमें से हमें ये दिख करके आ रहा है कि विमेन काउंसिलर्स फ्रॉम 6 सिटीज, जो 6 सिटीज की हम बात करेंगे, जैसे कि रायपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, अगरतला और कोलकाता, विमेन काउंसिलर्स का जो अटेंडेंस है इन इन सिटीज में मेन काउंसिलर से बेहतर है। तो ये काफी एक अपने आप में अच्छा एक संकेत दिखाई देता है। हावेवर जो हम जो ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें, जो कि सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, नागपुर और देहरादून, भले यहाँ पर जैसे मुंबई में आपको दिखाई देगा कि अटेंडेंस विमेन काउंसिलर का बेहतर है मेन से, पर अगर ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो वो 75% से कम है। तो ये भी काफी एक लेकिन चौंकाने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन हम और बढ़ा सके। इवन अगर हम विमेन काउंसिलर फ्रॉम देहरादून देखें तो वहां पर उनका जीबीएम में अटेंडेंस जो है जो पुरुष काउंसिलर है उनके मुकाबले 25% से कम है। और कुछ राज्यों में अगर हम देखें तो जो ओवरऑल टोटल अटेंडेंस ही अगर हम देखें तो वो 80% से काफी कम है जीबीएम में। तो वो तो अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है, तो जिससे दिखाई देता है कि किस तरीके का पार्टिसिपेशन है। बट ओवरऑल अगर हम 14 राज्यों का एक एनालिसिस करें तो काफी समानता दिखाई दे रही है दोनों के अटेंडेंस में। बट जो राज्य वाइज और सिटी वाइज देखें तो उसमें एक अलग तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम डेवलप करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर लाया जा सके। वहीं अगर हम डेलिब्रेशंस की बात करें तो ओवरऑल जो डेलिब्रेशन है, अगर जो 14 सिटीज का हमने किया उसमें हर प्रत्येक वर्ष का, एक वर्ष का हमने डेलिब्रेशन का डेटा लिया कि वे कैसे सवाल उठा रहे हैं, कितने सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें हमने एक वर्ष में अगर देखा कि अगर जो पुरुष काउंसिलर हैं, एक पुरुष काउंसिलर यदि एक वर्ष में 3 सवाल उठा रहा है, तो वहीं एक महिला काउंसिलर एक वर्ष में केवल एक प्रश्न ही जीबीएम या हाउस में उठा रही है। और जबकि अगर हम ओवरऑल देखें जो नागपुर के काउंसिलर्स हैं, जबकि उनका अटेंडेंस काफी कम है, लेकिन वो एक काउंसिलर वहां पर तकरीबन 5 प्रश्न उठा रहा है। जबकि अगर हम बात करें जो विमेन काउंसिलर्स की फ्रॉम रायपुर, भोपाल, मुंबई, जयपुर एंड गैंगटॉक और कोलकाता, जो विमेन काउंसिलर और मेन काउंसिलर का जो रेशियो है प्रश्न पूछने का, उसमें काफी समांतर है। यानी एक एक के मुकाबले बराबर है कि अगर महिला एक प्रश्न पुरुष काउंसिलर एक प्रश्न उठा रहे हैं तो महिला काउंसिलर भी उतने ही प्रश्न उठा रही है, जो अपने आप में काफी अच्छी बात है। जबकि एजॉल में तो हमने देखा कि जो महिला काउंसिलर्स हैं वो पुरुष के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रश्न उठा रही हैं। तो ये एक एजॉल के नजरिए में दिखने में आ रहा है। जबकि अमृतसर में उसका काफी हमें लाइक उल्टा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पुरुष काउंसिलर अगर एक प्रश्न उठाता है तो वही 7 महिला काउंसिलर मिलकर के केवल एक प्रश्न उठा रही हैं। तो इससे भी हमें दिखाई देता है कि हाँ, ओवरऑल अगर हम 14 जो सिटीज हमने देखा है तो उसमें काफी समानता दिखाई देती है। पर अगर हम सिटी वाइज अगर हमें देखना होगा कि कहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, कहाँ पर हैंड होल्डिंग की जरूरत है, या किस तरीके से हम और एंगेज कर सके हमारी महिला काउंसिलर्स को और उनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिला जो है कि एक अर्बन एरिया में सिविक समस्याओं से काफी करीबी होती है। और हाउस होल्ड में समझिए कि कोई एक सिविक समस्या है तो उस एरिया को रिफ्लेक्ट करती है, और उसी तरीके से हमारा अर्बन गवर्नेंस का जो थॉट है वो निकल के आता है, और वार्ड निकल के तो काउंसिलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है महिला सशक्त जो जनप्रतिनिधि है उनके सशक्तिकरण का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर रख सके। वहीं अगर हम टॉप 5 इश्यूज इन 14 राज्यों को मिला करके टॉप 5 इश्यूज रेज्ड बाय विमेन काउंसिलर्स और टॉप 5 इश्यूज रेज्ड बाय मेन काउंसिलर्स अगर हम देखें तो वो दिख करके आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी पिछले इस स्लाइड के पहले कहा कि महिला जो जिस तरीके के प्रश्न उठाएंगी वो सिविक इश्यूज को काफी नजदीकी से के करीब होती हैं, तो दर्शाता है। जैसे कि हम देख रहे महिलाओं ने रोड को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के सवाल उठाए हैं, जो कि उनके टॉप 5 प्रश्नों में से हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। उसी तरीके से उनकी और सशक्तिकरण की जरूरत है नाउ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन सवालों को उठा सके। नाउ जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या प्रावधान है वो भी हमें देखना काफी जरूरी होता है। तो जो हमने स्टडी किया, तो जो हमने सारे 28 राज्य और 3 यूटीज का जो हमने स्टडी किया, उसमें से हमें दिखने में आया कि
तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज एक्ट को छोड़ करके बाकी किसी भी राज्य के म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में काउंसलर ट्रेनिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। भले प्रावधान ना होने के कारण भी एडहॉक ट्रेनिंग दी जाती है, पर कोई स्पेसिफिक डिफाइंड ट्रेनिंग मॉड्यूल या फॉर्मेट ऐसे नहीं रखा गया है। और रिजर्वेशन, जैसे हमने ऊपर के स्लाइड्स में देखा कि किसी कमिटीज में रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन का प्रावधान है, पर कोई स्पेशली कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन काउंसिलर्स या किस तरीके से उनको एम्पावर किया जाए। जैसे हमने देखा अभी कि जो प्रश्नों की संख्या है, अगर मेन काउंसिलर एक प्रश्न पूछते हैं तो 3 प्रश्न पूछते हैं, तो विमेन काउंसिलर केवल एक ही प्रश्न पूछ पा रही है। तो उनको उस लेवल पर लाने के लिए किस तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट लाना चाहिए, उसका भी कोई ऐसा कोई मॉड्यूल या ट्रेनिंग फॉर्मेट नहीं है। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि हमारे किसी भी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में तेलंगाना को छोड़ करके कोई भी काउंसिलर ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। तो उसको एक इंक्लूजन या रिफॉर्म के तौर पर हमें देखना चाहिए। सो विद दिस, जो मेरे फाइंडिंग्स हैं हमारे रिपोर्ट के, मैं यहाँ पर अभी क्लोज करना चाहूंगा। एंड हमारे नेक्स्ट जो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस मेघना मल्होत्रा फ्रॉम अर्बन मैनेजमेंट सेंटर, कि वो जो हमारा पैनल डिस्कशन है अब उसको आगे लेकर के जाए। Thank you so much, Yogesh. A very good afternoon, everyone. We saw the highlights that Yogesh presented, and this entire study that has been conducted by Praja to assess the status and nature of implementation of this entire 74th constitutional amendment with a very specific lens on the reservation for women in municipal governments. We also saw, हमने देखा कि अलग-अलग राज्यों में किस प्रकार से एक्ट्स द्वारा अलग-अलग तरीके से इनेबल किया गया है। At a pan-India level, we have about, if you look at, we have roughly 260,000 local bodies, out of which there are about 4,800 urban local bodies, statutory urban local bodies. And the intent of this entire reservation was that through the provision of formal opportunities for women to partake in local governance, there'll be increased political participation and engagement of women in their communities. How is this translated and manifested on the ground? What have been the challenges, and what else needs to be done to enable women participation in true spirit? So today we have a very, very illustrious panel who have taken this journey from being ward councillors, mayors, leaders of opposition, as well as those who are members of Rajya Sabha and state legislative assemblies. And the idea today is to get a glimpse of the experiences of these thought leaders, that what they have done, and what we can leverage as a collective understanding as we move ahead as a nation that, truly imbibes gender equality as a foundational principle. So with this, I would like to very warmly welcome Srimati Vandana Chavan. She's a member of the Rajya Sabha. She started her career as a ward councillor and then was elected as mayor of Pune in 1997-98, when she also was the vice chairperson of the All India Council of Mayors, and was also the chairperson of Maharashtra State Mayor Presidents and Councillors Organization. As a mayor, she also incorporated the concept of the biodiversity park into the development plan of fringe villages, with a lot of resistance from within and inside, within and from outside a party. So very warm welcome, ma'am. I would also like to welcome Shri Satyajit Tambe sir. He's a member of the Maharashtra Legislative Council from the Nashik constituency in Maharashtra. He contested and won the Maharashtra Legislative Council elections from the Nashik graduate constituency in 2023. He's a postgraduate in management and political science, and he's also studied at the John F. Kennedy School at Harvard University in the US. He's also previously served as the State Youth Congress President and has twice been elected member of the Ahmednagar Jila Parishad. He's been laying very strong emphasis on urban development, youth issues, and women empowerment, among others. So very warm welcome, sir. I would also like to welcome Srimati Ratna Singh, who is a Deputy Speaker and Ward Commissioner in Guwahati Municipal Corporation. She's also an accomplished educationist, academician, life coach, and a motivational speaker. And she's also the president of the Rotary Club of Guwahati. So welcome, ma'am. And a very warm welcome to Srimati Meenal Chaube ji, jo Raipur Municipal Corporation की leader of opposition है,
Ma'am is on the field, but thanks so much for still joining us, ma'am. And this is the first instance in the city where a women councillor has been chosen as the leader of opposition. And this is her third term as in the municipal corporation as well. So the format will be that we'll have we have about 45 minutes of some discussion along with some time for Q&A with the audiences who have joined us online. A humble request to everyone that we'll keep discussions today completely non-partisan, and let's focus on the core agenda of discussing the challenges and solutions for truly enabling representation of women elected representatives. So with that, I think my first question is, I think to Vandana ma'am. I think many studies have been done, I think and they found a very positive correlation between such affirmative actions like this, this reservation with outcomes. एक JPAL की एक बहुत बड़ी study हुई थी जिसमें बहुत clearly पता चला कि जब women representation होता है local bodies में तो उसका एक net impact होता है on delivery of local goods to marginalized communities. I think Yogesh ne bhi jo baat kiya ki the kind of questions that women ask, the kind of questions that they really concern women councillors. So does, what are your initial thoughts? Having women elected representatives in city councils, has it bettered the way our cities function? Has coverage of services expanded? Thank you to Praja for having organized this wonderful interaction and the release of the report. I think it's very important to understand where the gaps are and how we need to address them at all levels for women representation. You're absolutely right, Meghana, when you say that women, after they came into politics, they have started addressing issues which were probably initially not given that kind of importance. I mean, I came into politics, I won the first election to the local government, the Pune Municipal Corporation, way back in 1992. And at that time, there were very, very few women in the open category who would get elected. So I really don't know what was the initial thing, assessment of women's representation. But after we got elected, surely some of the senior officers were very happy that so many women had come into the political process, and for two reasons. First, they said that the discussions which happened earlier were not so focused. They had become more focused on any subject it could be after the women representation came in. Secondly, they said there was no mudslinging and several as in Marathi we call it shivigai, abusing one another, and the Hello, ma'am, we lost you. fighting amongst each other. Ma'am, we lost you for so a many bit women there. Ma'am, we couldn't hear you for you. Now, and they were there. Vandana ma'am, we couldn't hear you for some Certainly, time. women do take a lot of interest in welfare measures, health, education, roads, simple civic amenities like water, because it's only women who really understand what is the problem when there is less water and how the women have to face it. Yeah. Okay. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. Am I audible? Yes, you can. Yeah. We can. So, certainly there was more focus on welfare issues, the civic amenities. When it's issues like water, especially in slum areas where they had to go to a common tap and make a line and spend I don't know how many hours to get the water, fetch the water to their households, and when it got converted after women's, when women came into the process, they made sure that women had toilets, because even those they wouldn't have in slum areas. The water where they had to go to a common tap, that was something which probably the earlier councillors had never thought of, because I think a woman understands these issues much better. So
definitely there was a focus on very essential requirements that the community requires, and that focus and implement. I wouldn't generalize that no man looks into it, but certainly more women immediately understand the issues like providing toilets, providing access to water, providing better education to their children, providing better health facilities, and this became the focus. So thank you so much, Vandana ma'am. I think this is something that, yes, we've heard. I think that issues around health of children, food, all of that, I think really takes center stage. But I think going to Guwahati, Ratna ma'am, what is your take, or what are your initial thoughts around this? Are cities better governed? Do they have a different focus when you have women at the heart of the leadership? At the very onset, namaskar to each one and of you, and to the very great panelist, my co-panelist, aapko bhi namaskar from Guwahati, and wishes from Ma Kamakhya. Since we really have Ma Kamakhya, and we are into like, you know, माँ का प्रभाव और माँ की कृपा हमेशा है हमारे साथ. And since we are talking about women representations and women elected representatives, am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Please go ahead. Okay. So the thing in Guwahati, when we're talking about, and when I was listening to Madam Vandana and all other people, and seeing the report also, the whatever is the statistics are telling, like we need to empower women a lot. 33% reservation cannot just go be in like, ऐसे आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत ये है कि औरतों को, महिलाओं को हमें एम्पावर करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे उनके नॉलेज में हो, हर चीजों को, स्किल्स के भी हमें उनको एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी. Now when we are talking about urban local bodies or panchayats, 73rd 74th amendment, बहुत कुछ है, वो सब मैं बोलना नहीं चाहूंगी, but ये है कि if you see that the panchayats were asked to make plans of the 11th, जो आपके schedule हैं, जो जैसे social welfare subjects हैं, जो 11th schedule में agriculture, land, irrigation, fisheries, सभी पे प्लानिंग करने के लिए उनको दिया गया है, छूट दी गई है. और आपको शायद पता भी होगा कि 74th अमेंडमेंट से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज भी हैं जो इनको कंसोलिडेट करते हैं, जो प्लानिंग्स पंचायत में होते हैं. तो अभी लाइक व्हेन वी सी दैट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज आर दे रियली हैविंग रिप्रेजेंटेशंस प्रॉपर्ली, लाइक फॉर Assam, in example, for Assam, where I belong and the representation is taking place, I have seen this time the government had given, the elections we had last 1.5 years back, and 50% of reservations were there, and I'm a part of the reservation. Definitely. So out of 60, total 60 wards we have, so 50% reservation, 30 wards belong to women. And I have seen down the line 1.5 years, the women representations, the women councillors who have been elected, even the deputy speaker, I am a woman, even the deputy mayor is a woman. We are into a very, pertinent questions, and in their wards, they are very much, very much focused for the development of women. For example, myself, I am a councillor of a major area of Guwahati. It's called to be Guwahati 1. And if you see that, like, I have taken help of the local self-governments, the urban local self-governments which we are having. And with the help of that, I'm trying to develop, what you can say, literacy programs in collaboration with various NGOs. Since I'm a Rotarian, so I collaborate with Rotary NGOs and other NGOs. And then I want to make the things which are being, which we can really apply for the upliftment of women, for their knowledge, empowerment, skill-based, whatever it is. So in Guwahati, the women councillors are really vocal. They're asking questions. They are doing on ground. The government is making them do. And really, we have a very strong headmaster as the chief minister. He is very much focused into this. And we are really working for the women empowerment, not only on the paper. We are trying to make them really empowered. We are making them develop some skills through which they can be financially empowered also. क्योंकि जब पैसे नहीं है ना, तो औरतों का कुछ नहीं है. तो उनके हाथ में यदि जब पैसे की काबिलियत आ जाएगी, पैसे कमाने के लिए, so that person, that lady will be understanding her family responsibilities. She will take part in the social activities, and from there we can groom that particular woman for political empowerment, for representation in the parliament, legislative assemblies, हर जगह पे कर सकते हैं. यदि हम उनको एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देंगे, उनको छोटी छोटी चीजों को सिखाएंगे,
आज एम्पावरमेंट अकेले हमें डायरेक्टली उनको लेके पार्लियामेंट पे नहीं फेंकना है, हम उनको ग्राउंड से तैयार करनी पड़ेगी, छोटे छोटे बॉडीज में उनको डालना, एनजीओस में डालना। तो वुमेन को एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, अकेले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, उनके क्वेश्चंस पूछने की, घर में उनकी प्रस्तुति जो है, घर में वो एम्पावर्ड है कि नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है कि स्किल बेस्ड है, उनको एक मोटिवेट करना होगा, उनको इंस्पायर करना होगा। तो हर तरीके से हमें अपनी बहनों को आगे ले जाना है। और हम 33% दे रहे हैं, चाहते हैं कि 33% हो, लेकिन कल जब 33% आज सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगी, सब कुछ होने के बाद करीब चलिए 6-7 साल के बाद वो प्रस्तुति होगी, तब हम महिलाएं कहाँ से लेकर आएंगे अपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज या हमारे जो है वहां पे वुमेन हम रिप्रेजेंटेशन कहाँ ले आएंगे? आज अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत में हमारा हो सकता है, चलिए पूरा कर सकते हैं, 50% हम डाल सकते हैं, 1/3 रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे होगा, पार्लियामेंट पे होगा, असेंबलीज में होगी, तो हम कहाँ से महिलाओं को ले आएंगे? तो मैं कहती हूँ कि नॉन पॉलिटिकल बाउंड्रीज तोड़कर महिलाओं को एम्पावर करना है, उत्थान करना है, और ये छोटी छोटी चीजें जहां हम हुकअप होते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप बड़ा अम्ब्रेला आप दे रहे हैं, 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मैं वेलकम करती हूँ। मेरी हर पार्टी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सबने किया इसके लिए, हर किसी ने कोशिश की हुई है। और आज नहीं, बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू से कितना काम चलते आ रहा है, और ये चीजें तो बहुत फेज वाइज में हो रही हैं, हर पार्टी ने काम किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमने जो भी किया है वो कम है। पंचायत और यूएलबी तक ठीक है, वो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें कम नॉलेज में भी काम चल जाएगा, चल सकता है, क्योंकि आपसी बातें हैं। लेकिन जब हम पार्लियामेंट में महिलाओं को स्थापित करेंगे, तो उनका स्किल, उनका नॉलेज, उनकी बेसिस हर तरह के हमें स्ट्रांग बनानी होगी, तब Absolutely. जाके हमारा 33% तो- रिजर्वेशन की जो So, आइडिया है ma'am, वो सही है। जो आपने एब्सोल्युटली आपने कहा कि हमें एक होलिस्टिक एम्पावरमेंट देखना पड़ेगा विमेन का। इट्स नॉट ओनली रिजर्वेशन इज वन अफर्मेटिव एक्शन, बट उसके साथ साथ वी विल हैव टू वर्क एट मेनी फ्रंट्स. But just taking this whole conversation about even women's representation and women's reservation to the next level, just a little bit. जो हमने ये, I think in the report said that we don't have that we don't have women's representation in epics committees, right? Standing committees में नहीं है. Report says that very few states have provisions for women reservation as chairperson in subject committees also. And many a times, जैसे महाराष्ट्र में ही है कि chairperson और deputy chairperson, women and child welfare section का, it has to be a woman. So this is also somewhere a very stereotypical role that is being given to women. I would say. Right. So absolutely. So I think my question to Satyajit sir, you is that how would you ensure that women's and what are your views on ensuring women's representation is in apex committees as well? Standing committees hai, alag-alag committees hoti hain cities mein, and it's not proportional to the council reservation. What are your views and thoughts on this? First of all, I would like to thank Praja for coming up with a very interesting report. And this is a topic which is very close to my heart for a few reasons. One, because I started with a local body in 2007 to 17. I was Jila Parishad member. When in Maharashtra, and Maharashtra is a progressive state, we started with women reservation, I think first time into the country. So जिस तरह की women empowerment की चीजें महाराष्ट्र ने की है आज तक, मुझे लगता है कि बहुत ही कम स्टेट्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया है जिस तरह का इनिशिएटिव महाराष्ट्र ने हमेशा लिया हुआ है. And secondly, my mother is also a president of a municipality for last 15 years. So I have all the perspectives within my house to see, how it is happening. So I want to, you are rightly asked कि apex bodies में, apex committees में representation कम है और उसके लिए क्या करना चाहिए, and women and child departments and women and child committees तक हम इसको सीमित रखते हैं, which is a complete injustice. And I sometimes feel it very funny that why only a women should made a women and child minister. Mostly I've seen in Maharashtra also, most of the time women is MLAs are made as a minister. But I want to point a very different perspective, जिसको रत्ना सिंह जी ने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र उसका किया था, जो था कि women empowerment कैसे हो सकती है और हम leadership कहाँ से लाएंगे.
क्योंकि 2007 में व्हेन आई बिकेम अ जिला परिषद मेंबर, तो एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था कि हमारे जनरल मीटिंग में एक बंदा आके अपना स्पीच दे रहा था, एंड देन वी ऑल वर सरप्राइज कि इसको तो हमने कहीं देखा नहीं है, ये कौन है। तो फिर थोड़ा जानकारी के बाद पता चला कि ये किसी मेंबर का पति है, एंड देन वी रियलाइज कि ये जनरल बॉडी मीटिंग में भी आते हैं और वहां पे भी बात करते हैं। And then government of Maharashtra had to come up with a GR, government resolution, कि no husbands or brothers or sons can interfere into women members' responsibilities. और ये भी हमने देखा है कि इस तरह का जो इंडिपेंडेंस उनको काम करने का मिलना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि उनका पूरा जो कामकाज है महिलाओं का, वो कहीं ना कोई और करता रहता है। एंड इन 90% केसेस आई हैव सीन कि दे डोंट गेट अ फ्रीडम टू रियली वर्क ऑन द इश्यूज दे रियली वांट टू वर्क ऑन। So and the very interesting problem with this women reservation is कि ये हर 5 साल बाद चेंज होते रहता है। और इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि व्हाट इज अ रियल ट्रेनिंग फॉर अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। इसका रियल ट्रेनिंग वो नहीं है जो ट्रेनिंग आप उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में देते हो या जहां देते हो। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होता है जब वो 5 साल काम करती है, लोगों से काम कैसे करना है, अधिकारियों से काम कैसे करा के लेना है, जीबी में कैसे बात करना है, स्टैट्यूटरी उसके कंप्लायंसेस क्या क्या है, ये सारी चीजें का ट्रेनिंग उसको 5 साल में मिलता है और रिजर्वेशन चेंज हो जाता है एंड somebody else becomes a member in her place। और मैंने इतनी सारी महिलाएं देखी है कि जो 5 साल ट्रेन हो गई है लेकिन आज वो घर बैठी है क्योंकि दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज देयर वार्ड इज नाउ नो मोर अ वुमेन रिजर्व वार्ड। So I think this is a very serious issue कि इसके कारण हमारा वुमेन लीडरशिप जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रही है जिस तरह से रिजर्वेशन में वो बिल्ड होनी चाहिए थी पिछले 25-30 साल में। वंदना ताई जैसे काफी कम लोग हैं जो लोकल बॉडी से आके अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा तक पहुंचे हैं। शी वॉज एजुकेटेड, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट अ राइट टाइम एंड देन शी गॉट अपॉर्चुनिटीज बैक टू बैक, सो शी कुड डू दैट। But otherwise, we have seen lot of other women who are very capable, but they don't get opportunities after the reservation is changed. क्योंकि हम women reservation की जगह पे मेल को डालना, मतलब मेल के ओपन की जगह पे women reservation डालना बहुत कम पसंदा करते हैं। And very important part into it is कि इसीलिए हमने quality of members अगर हम देखते हैं, जब MLAs MPs women MLAs and women MPs की बात हम जब करते हैं तो the quality of MPs and MLAs is much more better than quality of women representatives in local body। इसका कारण है कि उनको ट्रेनिंग जिस तरह का होना चाहिए ग्राउंड पे वो नहीं मिलता है और वो अपना अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। सो मैं तो हमेशा चाहता हूं कि जो विमेन जिनको 5 साल हमने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, जिनको हमने ट्रेन किया है, जिनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है, उनको यूटिलाइज करना सिस्टम में, उसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रावधान होना चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि काफी मिसिंग है हमारे सिस्टम में। अब ये 50% रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आएगा, एमएलए असेंबलीज में आएगा, बट वी डोंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लीडर्स। और हमारी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की वुमेन विंग्स जो है वो इतनी डिफंक्ड है कि वो उस तरह की लीडरशिप आगे नहीं ला पा रही है। I myself is an organizational person. I worked in a youth congress. I was a state president, and I've seen that, you know, into my committee as well, I was having only 5 girls as a member. I had to take extra efforts to bring 33% of women on the committee, which I could do because of various reasons. But I'm telling you that this is a very serious issue कि ये women reservation का outcome जो है, इसके लिए मुझे लगता है कि continuous process engagement भी उनके साथ होना बहुत जरूरी है। Absolutely. Thank you so much. I think Satyajit sir, and I think it brings us to a very interesting, I think thing that we have Meenal ji here, who is broken away from exactly what you said. कि she and Meenal ji, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी और that your story is super inspiring. कि first time you contested from a so-called proxy seat,
बट दूसरी बार फिर आप उसी सीट से जब वो ओपन हुई तब भी आप खड़ी हुई एंड यू वन फ्रॉम द सेम सीट। तो आपकी जर्नी ये कैसी रही है मीनल जी? आपको ट्रेनिंग आप कैसे सीखी ये सब? सो और ऐसे हम अगर होलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करना है अगर विमेन काउंसलर्स का, तो किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलूंगी, मैं बहुत डिस्टर्ब करी आप लोगों को। एक्चुअली मेरे यहाँ 17 को वोटिंग है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव चल रहा है उसका। तो मैं कैनवैसिंग में हूँ एक्चुअली अपनी पार्टी के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और रही बात मेरी जर्नी, तो मैं फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर बनी। मैं हाउस वाइफ थी, वो मेरे हस्बैंड पहले पॉलिटिक्स में थे। उन्होंने अपने टर्म में बहुत ज्यादा काम करवाए। तो फिर जब सेकेंड टाइम है, वो हमारा जो वार्ड होता है वो रिजर्व हो गया फॉर जनरल में वुमेन के लिए। तो मेरे हस्बैंड नहीं चाह रहे थे कि मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में आऊँ। एक्चुअली पार्टी भी नहीं चाह रही थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, क्योंकि मैं टोटली हाउस वाइफ थी। पर मेरे हस्बैंड बहुत काम करते थे, तो मैं और मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम सफर करते थे बहुत, वो हमको बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। तो मेरा कहना था कि भाई, जब आप इतना काम किए हो, हम इतना सफर किए हैं, तो हम तो इलेक्शन फाइट करेंगे। अगर हम सब जानते हैं कि हम आपकी वाइफ हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे हम। और फिर मैंने इलेक्शन फाइट की और मैं पहली बार चुनाव जीती। जब मैं जीत के आई तो मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया अपनी पार्टी में, अपने नगर निगम रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम मेरा जो वार्ड है वो फिर रिजर्व हो गया। तो मैंने बाजू के वार्ड से इलेक्शन फाइट की, पर मैंने काम की थी अपने पहले 5 सालों में, तो मुझे वहां से भी जीत मिली। मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जीती। थर्ड टाइम फिर मैं वार्ड में आई, वहां भी मैं जीती। और मैं काम करती रही। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई वुमेन अच्छा काम करेगी तो उसको किसी प्रकार की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। मैं जिस सीट से जीती हूँ वो जनरल सीट था, उसमें मेरे अगेंस्ट में 12 मेल पर्सन थे जो मेरे साथ फाइट किए थे। मैं अकेली महिला थी, वो जनरल सीट था इसलिए उसमें महिला कोई नहीं थी, पर मैंने पुरुष में भी उनको हटा के मैंने उस सीट से लड़ाई की और मैं जीती। और हमारे जो रायपुर नगर निगम है उसमें चाहे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हो चाहे बीजेपी के हो, मैं एक्चुअली बीजेपी से हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, पर हमारे यहाँ के सारे में फीमेल काउंसलर हैं, बहुत एक्टिव हैं। और मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारा जो हमको क्वेश्चन करना रहता है, हम अपोजिशन में है, तो हमारे यहाँ जो फीमेल लीडर है, फीमेल कॉर्पोरेटर है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है और बहुत बराबरी से लड़ाई करती है। और हमारे जो अपोजिशन है उनको फीमेल काउंसलर से ही ज्यादा डर रहता है। और रही बात जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उससे बहुत अच्छी बात है। 33% मतलब जो सभी उच्च स्तर के जो भी पॉलिटिक्स है, जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं, बहुत सी बातें हैं वो महिलाएं पुरुष से नहीं कर पाती, तो वो कंफर्टेबल रहेंगी जब हमारे पास फीमेल इलेक्ट होके आएंगे। तो उनको सब बातें अपने कर कर पाएंगे, वो फ्रीली होके बता पाएंगे। बहुत सारी, मैं आपको बहुत छोटा छोटा एग्जांपल बताती हूँ। मैं नगर निगम में हूँ, रायपुर नगर निगम में हूँ। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम कहीं भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं या कोई भी सरकारी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत दुखी रहती हैं, उनको वॉशरूम नहीं रहता। मतलब मैं पोस्ट ऑफिस, हमारा छत्तीसगढ़ कैपिटल है, तो वो मुझे बहनें कहती है वो बातें वो पुरुषों से नहीं कर पाती, तो वो हमको फ्री होके कर पाती है, तो ये हमको फायदा होगा। रिजर्वेशन से सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाएं घर से निकलेंगी और उनको अवसर मिलेगा, बस ये बात नहीं है। पर अगर महिला जनप्रतिनिधि चुनकर रहेगी, बड़े लोकसभा में रहेंगी, राज्यसभा में रहेंगी, विधानसभा में रहेंगी, तो इसका प्रेशर बनता है फिर। जो महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, जहाँ पे महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो महिलाएं जब हमारी प्रतिनिधि ऊपर स्तर पर रहेंगे, तो जो आम महिलाएं हैं, जो जमीन पे रहती हैं, अनेक सेक्टर पे काम करती हैं, ऑटोमेटिकली उनका दबाव बनेगा और उनको जो चाहिए रहेगा, जो सारी चीजें, जो जिस चीज की वो हकदार है एक्चुअली महिला, जो 50% हम लोग हैं, हम लोग सरकार डिसाइड करते हैं। हम बराबरी के जो जो भी सरकार बनती है उसमें महिलाएं हैं, पूरी सहभागिता उनकी रहती है, तो हमको अपने अधिकार भी चाहिए। हम क्यों पुरुषों से पीछे रहें? तो इसलिए हमको रिजर्वेशन हमको ये फायदा करेगा। हम धन्यवाद करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि उनके कार्यकाल में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है। आप लोग प्रजा फाउंडेशन वाले, बहुत कठिन टास्क था जो आप लोग किए हो, ये सोचना भी बहुत कठिन है। मैं आप लोगों को भी बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग हमारे यहाँ भी आए थे और जो आप लोग ने डॉक्टर्स निकाल के लाए हैं,
वो बहुत कठिन है, बहुत वो कैसे किया आप लोग, बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और इतने अच्छे लोगों के बीच मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी के बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Meenal ji. I think I'm going to come to Vandana ma'am, back to you, ma'am. Ma'am, the Praja report very clearly highlights that none of the states except Telangana have any provisions for even capacity building of elected officials, for elected representatives. You were the mayor of the city of Pune. How did you equip yourself to understand this role? Were there any formal trainings that happened? And how would you envisage a capacity building program for women elected representatives? Well, I think that capacity building is absolutely important. And as I said, I was amongst the first batch of 1992 when women's reservation happened in Maharashtra. In fact, Maharashtra was the first state to start the reservation policy even before the 73rd and 74th amendment came in. And I happened to be the product of the first batch. Yes, everything was new for me, the municipal corporation. I had never ever dreamt that I would be in politics. I'm a lawyer by profession, so I had never even wanted to come into politics, but I got the chance and took it up as a moral responsibility, and there I was. So yes, we didn't know how the municipal corporation works, and not only me, all the ladies in my batch, were absolutely new. But at that time, government of Maharashtra had made a budget provision for training women representatives, and this was through the All India Institute of Local Self-Government, which had several such programs for women elected representatives. And most of us didn't even miss one of those programs because that was something which was great learning for us. In fact, at that time, I thought, why only women? I think men also need training. All the men who are new in politics, they should also have training. Why should it only be for women? But yes, if we are just women together, we share our problems, we share our aspirations as to what you want to do as elected representatives. We can chat with each other more freely. So probably that was a wonderful initiative. Even today, I feel that there is a need of the day that women representatives, when they win, not just women, but even men need to be trained, because now there are so many issues like the SDGs, the Sustainable Development Goals, the issues and challenges like climate change, but unfortunately nobody talks about it. And in fact, every developmental issue, every issue that we take up at the local self-government has to be seen by the administration and the elected representatives through the lens of sustainability. That is unfortunately not happening. As far as climate change is concerned, we are seeing that cities are getting flooded. Cities get incessant rain, torrential rains. And how do you address this? Urbanization is happening so fast. So how do you address the DC rules? How do you make sure that the open spaces are kept intact? How do you make sure that you plant more trees to sequester the carbon? So if we are talking about big stories like carbon net zero cities and sustainable cities, then I think that kind of knowledge needs to be imparted for the elected representatives Sure. to do better. But, So here ma'am, again, I would say not just women, all elected representatives need to go through that kind of training. And I think Praja can do a lot in that direction. Women can get confidence only if you have the proper knowledge of the subject. Otherwise, you find that they only talk on general issues. I think more study Absolutely. and more in-depth content and knowledge is required. So, ma'am, I think what I hear from you is that we of course need induction trainings that need to happen when you're a first-time councillor, but you also need rigorous ongoing training programs during your tenure as well, right? I mean, and that, so it has to be structured in a manner. I would like to chip in here my experience as a member of parliament. We have an organization in Delhi called the PRS. So they have about 45 to 50 interns who intern with some 50 parliamentarians. And not only do they learn, but very honestly, they teach us also.
a few things on subjects because they research quite a bit on these subjects and then give us the inputs. I think this kind of program of hand-holding and constant capacity building can happen through interns at local self-government level and even MLAs and MLCs. I think that's because all of our elected representatives are very busy with our electorate and the people who come to meet us, programs which we have to attend. So even if you want to research on a certain subject, study on a certain subject, you want to, but you don't get the time. So I think that's the best way to really have handholding from the youngster lot who are very keen, very enthusiastic, and wanting to learn and make a difference. So some such programs at the local government level are absolutely the need of the day. Thank you, ma'am. I think we have a few questions also from the audience, and I would. So one of the questions is, so I think it's also pointing out to the report that what are the key reasons for low participation of women in elected the council? Is it education levels? Is it the lack of voice? Or is it something else? So Ratnaji, would you want to comment on this? Yeah, this is right. Women participation has many reasons why we are not having much of the participation. First is, I will not say that women are not able. Confidence level we need to boost, one fact is that. Second is education also, because right now, for example, we made the criteria of graduation in Guwahati Municipal Corporation in Assam. The graduation was made the criteria. So many people, were, cut down or where they were like sorted out. So second is education. Third is family inhibition also. Rajniti mein jaogi, rajniti karna hai. औरतें राजनीति नहीं ठीक कर लगता है, वो that mindset is there that politics is not meant for women. No doubt we are into urban local bodies, but that is also related to, sort of politics also. So Rajniti, family inhibition is there, that family might not allow. Social work, theek hai, but family reasons might be there. Monetary issues are also there. Financially, you need to, when we contest election, even at urban local bodies or panchayat level also, money is spent. So money is also one of the reason where, I always talk about financial support to the women, and financial independence is also very important. So these are the few factors why we find that women representatives are less. And I also want to point out one thing, that skill is very important, like what Vandana madam was talking about. We need to make the women skill. For example, sometimes I have seen my counselors, like, they are not much equipped with uploading things and so much. So tech savvy is very important, because these are the minimum things. Now the world is ruled by internet. We need to have a social media. We need to have connections with internet. So these are also the things, and knowledge is very important. We need to enhance because we are pulling up the ladies who are housewives tomorrow. Yesterday they were housewives, just their graduation, they have just come into the politics and they're playing the role of counselors now. So they were just simple ladies. They were not much into politics. They just came. So sometimes they are just sitting like, a spectator and audience in the assemblies. But gradually, for example, in my place, I have pulled out the ladies, I have pulled out the women counselors, and now they have been asking questions. They're getting tech savvy, but sometimes like discussions were hollow. What color of sari? This is the very beautiful saris you're wearing. So some discussions are limited to those particular, and major discussions are left to men. But now women are becoming sensible. They are developing ideas. They are learning things. And gradually, I think women empowerment, like Praja Foundation is doing, and I think the people who are more enhanced and equipped, the ladies who are more enhanced and equipped, they must, like, if I am ready, I have to put more 10 people, I have to make them ready. So if each and every person, women representatives, they make a target, they make their, they take a solemn promise that जैसे मैं ready हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं अपनी तरीके से और 10 लोगों को तैयार करूँ, और 3 महिलाओं को, 10 महिलाओं को तैयार करूँ, तो I think ये लंबा सा एक कड़ी बनेगा और कारवां बहुत दूर तक चलेगा. Thank you so much, Ratna ma'am. There's another question, and it's related to reservation. And the question is that reservation has achieved numerical. I mean, we've achieved numbers. 33% ka hai, we've achieved numbers. But many a times it's only a male members of the families taking decisions on their behalf. So do women councillors really have decision-making power?
And what can we do to tackle this issue? So, Satyajit sir, would you want to take this question? So as I said in my earlier comment also, that this is a problem and this has become a universal problem across the country, I would say. Because we don't have natural women leaders in adequate number, this is happening. So the only solution for this is that we should empower more and more women at various levels, not only in politics, but the awareness should be there. They should be empowered through social work. They should be empowered through some various political activities, not electoral politics, but other organizational politics also. We should empower them. So, if there are adequate number of women leaders into the system, then naturally this kind of practice of giving a proxy member will go away, and it will eventually go away. I must tell you that there are various examples I have seen on my own. So a very classic example is there that one corporator was there in my town, and she was just a SSC passed corporator, just a 10th pass corporator. When she went into the house, when she went into the general body meetings, and she realized that she has to learn and she has to understand things, and nobody can make her fool. She started her studies, she did her BA, she did her MBA, MA, and now she is like well adequate with political science and everything. So, you have to empower such kind of leaders and such kind of women leaders into the system. I think that is the only solution to tackle this situation. Otherwise, proxy, तो आपको पता है कि इंडिया में हम not only in case of women, but in case of many reservation seats, like scheduled caste reservation seats, in scheduled tribe reservation seats, we always see कि local strong leader जो होता है, वो एक अपना proxy खड़ा करने की कोशिश करता है. तो ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ हमेशा से चल रही है. इसको ब्रेक करने के लिए उस कैटेगरी के लोगों को आगे करना और उनको एम्पावर करना is the only solution. Thank you so much. And absolutely, I think what I'm hearing from all of you is, one is, I think you all spoke about that along with affirmative action. I think there's a need for holistic empowerment. I think which starts from really from grassroots from day one, ranging from financial empowerment, education, of course, skilling, the whole, updating their knowledge, building capacities. You also spoke about structural changes in this way, in the way we are trying to make this whole reservation work. How do we equip all of our councillors, not only women, but all of our councillors to tackle the current issues? Climate change is in our faces. How do we tackle all of those issues? So I think with this, I would like to profusely thank all of you who have taken out time from their super busy schedule. Can I add one more point? Sure. Can I? Sure. Sorry to interrupt in between. I was just reading a question about the attitude of the male councillors, to the fellow women councillors. I just read a question and I just want to remark on that. The fellow male councillors are very supportive because they belong to the same political party. But in the municipal corporation, I've seen even the opposition male, the councillors, they also help the other parties. There is a very good friendly atmosphere. There is not that. But thing arises, the main question is the bureaucracy. The commissioners, the technical people who are working, the engineers, the divisional engineers, the various divisions are there in the municipal corporations. They don't like the women to interfere with them, This is something which I have observed, that bureaucracy does not admit women talking or asking questions, giving them orders, not orders, in fact, asking them to do something. There some problem arises. I have noted. And then when I have remarked these things in the assembly as a deputy speaker, then the attitude of the bureaucrats, of the officers has changed a lot. Otherwise, they were thinking कि ये तो महिलाएं घर से आई हैं, simple graduation, इनको कुछ नहीं पता है. हम technically इनको बुझा के कुछ अलग करके हम समझा देंगे. They will be understanding, and then they will be playing their own role. This engineers, whoever they are. But after my interference, in my case, I can talk about myself. What I have done, I have talked to the women councillors, no matter my party or other party, and I've told them that strongly you ask questions, don't let the bureaucrats override you, and you have the right. After this, the attitude of the bureaucrats
and the engineers and all have changed. Now the women are able to implement the plans which they have made. This is what I wanted to add. Thank you. Thank you. I think very important also. This whole working of, I think, bureaucrats with the elected bodies is also very important. Thanks so much, all of you. And I think there's a lot that Praja has on its plate as suggestions and moving forward from this report, which is brought out all of these, facts out. So over to Meghna Indurkar for closing remarks. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Meghna ji, for having all of these. We have had an amazing panel here with women like across genders, talking about women representation and empowerment, and also from different geographies and different experiences and different levels of experiences, right? And it's great to see that in a small way we've seen what women empowerment in city governments actually has been, the journey and the stories that we have heard today. And I think it was great to see that all the panelists across agreed on the need for capacity building of all the councillors in general, but especially women councillors, because we see most of them are elected for the first time, and when they are in positions of either a councillor or even decision making positions, they bring a lot of new perspectives, which the report also reflects. And I think a great discussion. I really like one of the points that panelists made that we have to go beyond the numerical representation to developing leaders when it comes to women in our country, and we have to look at it at a very strategical way with a long-term vision, and not just looking at next elections or in the next 5 years which seat will go to women. So those discussions are very important, and we have had quite good insights from the panelists. And Praja currently is working with multiple city governments, state governments, and also with the central government at policy level, looking at urban governance reforms. And these discussions and these suggestions will definitely become a part of these suggestions and reforms that we are going to work with. I would like to thank all the panelists for their time and their perspectives and experiences that they've shared with us. Thank you so much for making this a successful discussion. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you.